live, sir. Very good evening. In this today's session about environmental, social and governance trend of 2003, I, Dr. Pankaj Das, welcome all of you for this half an hour session. Within next 30 minutes, I know this is very less time. I will try to just give a brief outline about what exactly ESG is that and how we can go ahead about it. Basically, four things we are going to discuss here. A brief introduction about ESG, and we'll try to understand the terms sustainability and concept of SDG. Then there will be brief about environmental, social, and governance practice, as well as at the end, we will discuss about ESG trend 2023. I hope this session will be helpful for you. And with this, I'm here, as I mentioned earlier, my name is Dr. Pankaj Das. And I like to thank Vyapar Jagat for inviting me for deliver this keynote session on the ESG. We have founded South Asia Sustainability Alliance in 2016. We are here to promote sustainability in industry, academia, and civil society organization. So as a part of awareness building this initiative, we have collaborated with Vyapar Jagat. So thank you once again. Basically, as my expertise and qualifications are concerned, I'm a certified CSR professional from HCL Foundation Academy. I'm a certified social work professional also. I'm assistant professor. I teach in Yashwantrao Chauhan School of Social Work. I basically teach sustainable development goals, ESG, research and statistics, and project design and monitoring. As of now, I have trained more than 1,400 students, and I'm so happy that they are working in different parts of the globe. I attended the first development core group meeting of G20 in Mumbai, as well as I was selected by UNICEF Department of Higher Education, Government of Maharashtra, to implement pilot project. It is called Youth and Climate Action. So this is in brief about me, and a little bit about what exactly South Asia Sustainability Alliance is. It's an alliance, is a partnership of industry, academia, civil society organization, and we all have come together to promote sustainability. Okay, and this project was initiated by a non-profit called Action for Social Reform. Basically, what we do, we train professionals who believe in sustainability, and we certify them. That's the major two things. Basic thing to understand, जो मुझे लगता है बहुत जो आप देख रहे होंगे, हम में से सबने सुना होगा what exactly sustainability is, लेकिन ये sustainability practice कैसे करते हैं, we are going to discuss something about this. So if you Google, अगर आप Google करते हो the word sustainable, तो आपको दिखेगा एक term, it is called टिकाऊ. Okay, and the word sustainability, it is derived from a Latin word, it is sustain. Okay, इसका मतलब होता है to sustain, to endure, okay, to support, to uphold, और टिके रहना. So at individual level, it is good to understand. Yeah, it's okay. His endurance is more like वो टिक गया. Okay, इसको अगर समझाने के तरीके से अगर मैं बताऊँ तो you can understand like I survive, I exist. इसके कुछ पर्सनल रिलेशन में आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इट मे गो लाइक दैट वे. ओके, बट एज फार एज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न, जब हम सस्टेनेबिलिटी को इन्वायरमेंट से रिलेट करके बात करते हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन कॉर्पोरेट सेक्टर, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू चेन. It is all about creating a business strategy which takes into consideration of ethical, social, environmental, and economic dimensions of doing business. Basically, what we understand, हमें क्या लगता है business क्या है? Business is all about selling goods and services और profit earn करना. But in the process एक और चीज बहुत ही important रहती है, that is called, हम goods और services तो बेचते ही है, profit earn करते ही है, but at the same time we market a trust. जो कस्टमर का ट्रस्ट वैल्यू रहता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट वी मार्केट. सो आई थिंक जो फेमस ब्रांड्स है इंडिया में, जैसे टाटा, महिंद्रा, बजाज, इन्फोसिस, सैमसंग, वो बिजनेस तो करते हैं, लेकिन उनके बिजनेस में एक वैल्यू
अटैच्ड रहती हो, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड दे डू बिजनेस, लेकिन अब वो जमाना है जहां पर आपको बिजनेस विद वैल्यूज करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, इट इज बिकमिंग मैंडेटरी ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये आपकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि वी शुड डू बिजनेस विद वैल्यूज। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सस्टेनेबिलिटी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आई वॉन्ट टू लेट यू नो वन थिंग। देयर इज अ कंट्री कॉल्ड नाउरू, ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। और नाउरू के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा देश है जो खुद को ही खा गया, द कंट्री विच दैट एट इटसेल्फ। सो लेट अस ट्राई टू गो थ्रू अ स्मॉल केस स्टडी ऑफ दिस कंट्री। इससे हमें पता चलेगा कि सस्टेनेबिलिटी या को एग्जिस्टेंस जिसके बारे में हम फोकस करेंगे, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नाउरू एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ की पॉपुलेशन हार्डली 12,511 है, एंड इट्स इन एंड अराउंड 4,000 किलोमीटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। किस्सा ये है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉस्फेट मिलता था। फॉस्फेट ये फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, माचिस की तीलियों में आप देखते हो। सो ओके, इट्स समथिंग लाइक इट इज रेयर कमोडिटी। और इसकी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, किनारे के पट्टी पे ज्यादातर लोग रहते हैं, एंड मिडिल एरिया में मोस्ट ऑफ द फॉस्फेट डिपॉजिट्स आर। सो in 1906 Germans were the first who explored phosphate there, और उन्होंने वहां से उसका एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 1906 से 1913 तक जर्मन्स थे वहां पे, बाद में ऑस्ट्रेलियंस दे केम हियर, एंड 1914 टू 1968 ऑस्ट्रेलियंस ने वहां से मैक्सिमम फॉस्फेट को निकाला। देन देयर इज वन, एक और आइलैंड है वहां पे, दैट इज कॉल्ड क्वींस आइलैंड। वहां से बहुत सारे लोग मतलब ट्राइबल ग्रुप दे केम एंड दे सेड कि नहीं, वी शुड रूल हियर। तो 1968 में उन्होंने वहां पे फाइट की और उस आइलैंड को अपने कब्जे में कर लिया, एंड दैट्स हाउ इन 1968 जो नाउरू है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड बन गया। नाउ लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, लेटर ऑन जो वहाँ के लोकल शासक थे, दे स्टार्टेड ओके एक्सपोर्टिंग फॉस्फेट्स to Europe and America. Suddenly वो जो 12,000 पॉपुलेशन जो अभी आपको दिख रही है, they become super rich. इतने रिच हो गए कि 1974 में they had second largest GDP, 3 times higher than US. So technically जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? In your screen you can see here कि left side this is Mr. Rustam, okay, he is a president there. क्योंकि वो एक आइलैंड था तो लोगों को आने जाने के ज्यादा साधन तो थे नहीं, तो उन्होंने एयर ट्रैफिक पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, एयरलाइंस शुरू की, सभी के पास महंगी गाड़ियां थी। देन देयर वाज वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, दे वर ओबेस इन द सेंस दे वर वेरी हेल्दी बिकॉज लाइफस्टाइल वाज लाइक दैट, लेस वर्क एंड मोर मनी, दैट वाज द सिनेरियो। ये सिलसिला चलता रहा, आउटसाइड भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, एंड डे एंड नाइट दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग फॉस्फेट डिपॉजिट व्हाट इट वाज देयर। वो एक छोटा सा आइलैंड है, उसकी भी कैपेसिटी होती है। व्हाट हैपेंड, वन डे सारा फॉस्फेट खत्म हो गया, तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था वो दूसरी कंट्रीज में चले गए, बट वहां पर जो सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, अब उनको देखने वाला कोई नहीं है, देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम। नाउ द एंटायर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एड, and a lot of organizations are working there. So this is just a small story. I want to let you know that if we do not take care of the natural resource जो हमें दिया गया है, अगर हम aimlessly उसे बर्बाद करते रहे तो हमारी भी कंडीशन नाउरू जैसी हो सकती है। See, there is a line here, I exist is not a good example of global sustainability in the sense जस्ट मैं जिंदा हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मैं कंज्यूम करता हूं कि मैक्सिमम लेवल पे। दिस इज नॉट द वे वी शुड लिव, ओके, दैट इज नॉट द, शुड नॉट बी द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो नाउरू का जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। सो कीपिंग दैट एंड एवरीथिंग इन माइंड, in 1987 यूनाइटेड नेशंस
they have given one definition of sustainability. It is very simple: fulfilling the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Just understand, अगर हमारे पास कुछ natural resource है, for example water, हमने पूरे ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, वी आर इन वाटर स्ट्रेस जोन, इंडिया इज इन दैट. सो व्हाट वी आर लिविंग फॉर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या सेव कर रहे हैं या हम क्या दे रहे हैं उनको. आई डोंट थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ लिविंग. सो सस्टेनेबिलिटी हमें इस अंदाज से समझना चाहिए कि इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू सम कंपनीज, सम ग्रुप्स. ओके, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी वो एजेंडा है जो अब सोशल गोल बन चुका है. एंड ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ रहना सीखना चाहिए. एंड वी शुड लर्न टू को एग्जिस्ट विथ बैलेंस ऑफ रिसोर्स एंड नीड. सो दैट्स इट. इन नटशेल में इतना ही बता सकता हूँ. बेसिक थिंग क्या है, देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बट देयर इज ओनली वन अर्थ. आई थिंक वी शुड लव इट. तो हाउ टू लव इट? ओके, keeping all these things in mind, one more thing is there. United Nations ने एक गोल दिया and it is called Sustainable Development Goal. इस गोल में there are 7 Sustainable Development Goals are basically a bunch of 17 goals. So आप देख सकते हो स्क्रीन पे. Okay, there are these 17 goals can be divided into environment, the goals which addresses environmental sector, then social sector and governance sector. और इसका जो टाइम पीरियड है, इट इज फ्रॉम 2015 to 2030 वी हैव टू मीट दिस गोल्स. सो ऑलरेडी 2050 to 2023, राइट, हार्डली 7 years are remaining. And I think most of the people, they are not aware about SDG, Sustainable Development Goals के बारे में पता नहीं. So that's one irony. Second thing is that efforts from government, public sector, civil society, it is there, but I think it is not enough. खासकर post पैंडेमिक एरिया में ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, टेक योर टाइम, स्टडी समथिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. आई एम श्योर कि अगर आप इसे स्टडी करोगे थोड़ा बहुत तो आप इसके बारे में बता ही सकते हो. लेट मी शेयर यू वन पिक्चर. ओके, नाउरू क्राइसिस से हम क्या सीख सकते हैं. हमारे मार्केट में अगर आप कहीं भी रूरल एरिया में इफ यू गो, यू विल फाइंड दैट कि उस दुकान का 90% हिस्सा इस तरह के प्लास्टिक के जो सैचेट्स रहते हैं, पैकेट्स रहते हैं, उससे भरे रहते हैं. हार्डली इसका रेंज रहता है, इसका जो कॉस्ट रहता है इस प्रोडक्ट का, इट इज 5 rupees to 30 rupees. सो दैट इज द कॉस्ट. ओके, सो कस्टमर हैप्पीली बाय करता है, दैट्स व्हाई कंजम्पशन इज मोर. और बाय करने के बाद दोस प्लास्टिक सैचेट्स, ओके, यू फाइंड एवरीवेयर. सो नाउ द थिंग इज दैट क्या होता है उसका, बिलियंस ऑफ इस तरह के पैकेट्स आपको सब जगह बिखरे में लिख दे. नाउ एक पुरानी कहावत है कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है. इवन दो इट इज ऑफ 5 rupees or 30 rupees, but the amount of energy it consumes in production, it is more than that 30 rupees or 5 rupees. Okay, आप सभी को पता है, I hope you know all that कि the picture which you see here, ये हमारा अर्थ है और अर्थ का ये लेयर है. ओके, अब इस लेयर में ग्रीन हाउस गैसेस रहते हैं. ग्रीन हाउस गैस सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो ये वो गैस होते हैं जो सनरेज को पृथ्वी पर आने नहीं देते, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है. और ग्रीन हाउस गैस में बेसिकली 4 टाइप के गैसेस रहते हैं, मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड, देन CH4 मीथेन, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड देन देयर आर इंडस्ट्रियल गैसेस लाइक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. ओके, सो वो रहते हैं. नाउ इनका रहना बहुत जरूरी है. ग्रीन हाउस गैसेस रहेंगे तभी हम सरवाइव करेंगे. बट द प्रॉब्लम इज, ओके, अगर हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया और बहुत ज्यादा इस तरह की गैसेस लाइक मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड हमने एमिट किया, तो ये फिर जाकर इस पृथ्वी को एक चैम्बर के जैसा बना देते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू फील कि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है. एक जो टर्म है क्लाइमेट चेंज, वो भी आपको अभी दिखता होगा कि अनटाइमली बारिश होती है, अनटाइमली रेन होता है. 2 months ago, आई थिंक 1 month ago, गुजरात की कुछ सड़कें मैंने न्यूज में देखी थी कि उनके जो टार थे वो पिघल गए. Okay, so why this is happening? Northern area, there is a heat wave, then extreme rain is there. All these are examples of climate change. Okay,
Now, climate change के लिए responsible कौन है? So, if you read here something, okay, the manufacturing and production sector accounts for 1/5 of global carbon emission and 54% of the world's energy uses. So, सबसे ज़्यादा pollutions तो companies करते हैं, तो जवाबदारी भी उनकी ही होनी चाहिए primarily. That's the thing. So, वहाँ पे balance and checks लगाने की जरूरत है. Now, this slide you just see, okay, these are the details of greenhouse gases. Okay. So now, as I mentioned earlier, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है. सबसे ज्यादा CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कहाँ पर होता है? China is there, United States are there, Russia is there. Okay, India and okay, comparatively Western countries के मुकाबले हमारे यहाँ पे कार्बन एमिशन कम होता है. मतलब जितना होता है उसे भी कम करने की जरूरत है. But yeah, Western countries are more into it. So I think वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए. Okay, and as a result you see हमारे यहाँ climate change दिख रहा है आपको. Climate change, it is not just about untimely गर्मी लग रही है, untimely बारिश हो रही है. It also affects our agriculture production. एक बार agriculture production अगर hit हो गए तो think what will happen. Okay, once the pattern changes, no, our economy will change. Then it will impact everything, jobs, employability, okay, consumption, हर चीज के ऊपर impact होगा. Directly, indirectly इसकी आपको भी उसका impact दिखेगा. So I think जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए, हमें भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. इन द सेंस ये हमारा काम नहीं है. अब इतना कह के अब नहीं जी सकते शायद. वी हैव टू एंड वी मस्ट, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शंस भी नहीं है. ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कंपनीज, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट्स around the world, they are increasingly focused on making products, services and operations which are sustainable. So there are certain terminologies if you want to understand ESG, like net zero, sustainability, okay, disclosure, ऐसे बहुत सारे terminology है वो आपको समझना पड़ेगा. One more thing I want to let you know that कि अगर आप business करना चाहते हैं, या you are into this, okay, you must understand the ABC of ESG. Yeah, right now it is in India. Okay, अभी तक तो top 1000 companies के लिए ही ESG disclosure mandatory है, but in the coming years, I think it will be mandatory for all the manufacturing companies. So I think it's a high time we should know what exactly ESG is. So now in this context, there is two things. Business leaders जो है, वो sustainability challenge face कर रहे हैं. कंपनी को कैसे सस्टेन करना है, प्रोडक्ट को कैसे सस्टेन करना है, और जो पूरी कंसेप्ट है सस्टेनेबिलिटी की, इसे कैसे इंटीग्रेट करना, हाउ टू इंटीग्रेट दैट इनटू आवर बिजनेस. सो दैट्स द मेजर चैलेंज फॉर देम. सेकंड चैलेंज दे आर फेसिंग इज हाउ टू मेजर एंड ट्रैक द इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. Then there are, what are the implications of including sustainability in the bottom line? How to do that? So that challenge they are facing. And how to communicate sustainability to the stakeholders, shareholders. That's also equally important. We are doing this. Okay, we are addressing climate issues. Our products are environment friendly. So you communicate karna bhi, it's equally important. So how to do that? All the business leaders, they are facing this challenge. In that context, there is a ray of hope in the sense, एक framework आया है. It is called ESG. In short, इसको अगर in brief अगर मैं बताऊं तो it is environmental, social and governance. अब ये terminology, what exactly this is? ये basically एक platform है या एक framework है जिसपे सभी कंपनी को ऑपरेट करना चाहिए. It is expected. As of now, it is not mandatory. As I mentioned earlier, top 1000 companies के लिए इंडिया में it is mandatory. But this is the standard platform in which all the businesses should operate. Okay. ESG, it basically integrates sustainable business practices. Okay. And it also provides a way to, okay, mitigate business risk and identify the opportunities.
So current trend, if I have to talk, which I'm going to share after 2-3 slides, you will see that globally ESG is everywhere. The business circle, everybody talks about ESG. I think you also should invest your time, money, and energy in understanding what exactly ESG is. देखिए, the main agenda of ESG is to attract investment in the company. Okay. So now in company, those who are institutional investors जो होते हैं, वो उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहां उनका ESG इंडेक्स पे उनकी रेटिंग अच्छी हो और उनको पता हो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से रिस्क कम है. तो रिस्क अगर कम है तो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं लोग. इन इंडिया ओके, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज एवरी डे दे इन्वेस्ट एंड स्पेशली दे focus on those companies, those who are in ESG list. So that's how ESG is so important. Okay. So I think ESG is going to be normal by next year. Like हर एक company को ESG के जो pillars हैं, 3 pillars like environmental, social and governance pillar, इसे तो address करना ही पड़ेगा. That is mandatory. It will be mandatory. Okay. So now, as I mentioned, there are 3 pillars. Okay, you can see here. One is environmental. So what all things is covered here? What is the energy consumption pattern in the company? What is the pollution control mechanism a company or a manufacturing this one setup is adopting? How they tackle climate change, and what is the waste management procedure? खासकर मैं इंडिया की बात करूं तो वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसका क्या होता है, दैट यू नो. ओके, वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस इवन दो वी हैव laws and procedures, everything, but I think individual responsibility people are not ready to take, and that mindset needs to be changed. In the beginning I told you that sustainability should be social goal. It's everybody's responsibility. So ये जो 4 parameters, 3 parameters में environment में what you see here, okay, this is something everybody should take seriously. They should learn from some other countries where waste management is given top priority. I think in India also a lot of efforts government has put to create awareness among people. Okay, this is the way to do it. Now adopting a practice, it should be our responsibility. In social front, what kind of basic human rights companies providing to its workers? Okay, whether any child and forced labor are there. Okay, in mining sector you find something like this. What kind of community welfare or CSR activity a company is doing? It's all about that. Then what kind of efforts in health and safety mechanism company has adopted? So those parameters, okay, it addresses. As far as governance is concerned, what is the quality of management board, how they address sustainability issues, what kind of ethical values they create for themselves and people, those who are into it. Then what kind of diversity is there in their board members? Those aspects are here it is assessed. And if there is any conflict of interest, how they mitigate that. So those major issues are addressed in governance sector. So basically, अगर मुझे ऐसा बताना हुआ तो it may sound कि it's very easy. 3 pillars are there, and there will be okay standards, and accordingly company operates. But application of these 3 pillars, it is something very crucial. और मुझे लगता है इंडिया ने पहला कदम बढ़ाया है. Okay, we become the first country in the world. जो ESG रिपोर्टिंग होती है हर एक कंपनी को जो करनी पड़ती है, मतलब हमारे यहाँ पे भी टॉप 1000 कंपनीज के लिए है ये. सो ये रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, और एट द सेम टाइम ESG रेटिंग होती है. ओके, ESG रेटिंग एजेंसीज के लिए भी गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ रेगुलेशंस लाया. दैट्स रियली गुड थिंग. ओके, सो नाउ coming to ESG trend, what exactly is? Bloomberg has published one article, and in that it said that in the next 3 years, 1/3 of all global assets would have ESG mandates.
At the same time, you see demand for ESG jobs in India, it grows 468% in the last 3 years. That's the huge. Okay, that itself shows that कि ESG sector में क्यों खास करके young generation को why they should invest their time here. Okay, this is the field where you can bring significant change. As I mentioned, ESG ना basically एक company का portfolio बनाने में मदद करते हैं. Okay, it also helps in their branding and marketing. Okay, if you see here, ESG focused institutional investments are expected to soar 80% to $33.9 trillion in 2026. That is the target. Okay, we are thinking ESG जो इसकी जो investment है, it will reach 33 million. So it's a huge number. More than $17 trillion, or nearly $1 in $3 in the total US assets under management. It comes under, it follows ESG principles. Okay, so this is this scenario. Okay, now institutional investors, as I mentioned earlier, it's a type of investor in IPO. They invest in IPO through other people's money. They have a lot more money to invest than individual investors, so their purchase can hugely impact the price of a stock. So ESG ना एक प्लेटफॉर्म है जहां से एक कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट ला सकती है. And you know, if you want to do business, you need money. Without money, it cannot be done. So earlier, people used to think that कि business का मतलब होता है profit कमाना. And profit means it's just one-way profit. They were least bothered about environment, people, worker, anything. But the recent trend, it shows that if you invest in ESG criteria, your profit will be more. And that's the trend. A lot of research, it indicates that that's the trend it's going on. So now, in India, there is a business responsibility and sustainability reporting framework, which is designed by Securities and Exchange Board of India. And basic idea is to encourage companies to integrate sustainable and responsible business. See, by name itself, agar aap focus karenge, business responsibility and sustainability reporting. Idea is that aap business kijiye, but responsibly business kijiye. Okay, we should not create situation like Nauru Island. Okay, jahan hum sara kuch adjust kar de aur there is nothing at the end. Okay, so that's the thing. Now, what are the ESG trend which we should watch for the coming years? Just like CSR के जो compliance होते थे, अगर बोर्ड उसे फुलफिल नहीं करता था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे बोर्ड्स को पेनल्टी लगाई थी last year. In the same way, I think in coming days, if business leaders fail to act on ESG point of view, I think they may suffer consequences. Those things are also coming. So better we should be prepared. There will be convergence of governance and standards. In India, we are already there. Okay. So हमने already BRSR का already आ चुका है, and it's a good thing for all of us. Third and most important thing is that sustainable products will become the norm. Sustainable products in the sense, nowadays, most of the products, it comes with sustainability rating. So in the coming days, you will see that more sustainable products will be there in the market, or your individual buyers say, okay, they will look for it. And that's the trend we all should set together. Fourth thing, what already we are witnessing, that's a work from home will be a normal feature of many careers. That's really good. It's already happening. अगर समझो आप बिलियंस ऑफ पीपल ऑफिस में जाके घर से ही प्रोडक्टिव काम करते हैं तो कितनी एनर्जी सेव कर सकते हैं. We can save a lot of things. Okay. Now, carbon offsetting will get better. That's also a thing to watch upon. Then there will be greenwashing will be punished. अब ये greenwashing क्या होता है? Let me tell you. कुछ कंपनियां होती हैं जो मीडिया में कुछ और बताती हैं, गवर्नमेंट को कुछ और बताती है, बट इन रियलिटी दे डू नॉट डू इट. ओके, फॉर एग्जांपल
थोड़े दिन पहले एक इंटरनेशनल एमएनसी ने बताया कि हम प्लास्टिक के पैकेट्स यूज करना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। और हमारी कंपनी वी आर अगेंस्ट इट, और हम इसे टोटली वाइप आउट, मतलब हम इसमें कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं करेंगे। बट अगर आप किसी भी दुकान पर जाओगे तो उसी कंपनी के आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फ्रॉम सोप टू शैम्पू टू एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ ग्रीन वॉशिंग। ओके, सो इन मीडिया समथिंग, इन रिपोर्ट समथिंग, इन रियलिटी समथिंग, अगर ऐसे मिलेंगे तो आई थिंक इन फ्यूचर में बहुत सारी कंपनीज को पेनाल्टीज भरनी पड़ेगी। सो ग्रीन वॉशिंग विल बी पनिश्ड, एंड दैट इज फॉर श्योर, दैट शुड बी। ओके, नंबर 7 इज ESG इन्वेस्टिंग विल कंटिन्यू टू राइज। वैसी कंपनी जिसका ESG पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट, इट विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट्स। देन रिन्यूएबल एनर्जी विल बिकम चीपर, एंड आई थिंक आपने सुना ही होगा, नितिन गडकरी जी ने भी एक बात कही थी कि बाय 2050 वी विल, ओके, फ्रॉम इंडियन रोड्स all the, okay, fossil fuel vehicles will be, okay, it will not be there. So हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या उस तरह के कुछ अल्टरनेटिव एनर्जी वाले से व्हीकल से भी will travel. So that's a good thing. Okay, so but renewable energy, as far as concerned, as of now it is bit costly, so it will become cheaper. Already government of India is giving a lot of subsidies, but I think that a lot more things need to be done in this sector. And since इतना कुछ अगर ESG में हो रहा है, and in the previous slide I told you that there is 468% of jobs increase in this sector. So ESG sector में और भी ज्यादा jobs रहेंगे। Basically ESG sector में जो लोग काम करते हैं, they are called ESG analyst. वो ESG report बनाते हैं कंपनी के, ESG का portfolio construct करते हैं, then they manage it, then they suggest companies to invest. This kind of work they do. Now ESG certification courses in India एक ही दो जगह है जहाँ पे available है। I think more universities should come forward and they design syllabus for this. We are trying to, in an association with Symbiosis, very soon you will get certificate course. So anybody can do this certificate course. Mostly finance background वाले लोग रहते हैं, but anybody who is passionate about sustainability, I think आपको ESG sector में आना चाहिए। And there is a great opportunities जहाँ पे आप significantly change ला सकते हो। At the same time, ये जो ESG framework बनाने वाली agencies हैं या rating standards हैं, I'm very confident that in coming days it will also keep improving and bring new insights into it. So this is it. आज मैं 30 minutes का time था मेरे पास। In short, it's a vast field, ESG, but I got an opportunity to share something with you. Online you can search, there are plenty of materials pertaining to this, and I'm sure sustainability वो aspect है जिसे आप अगर पढ़ना शुरू करोगे तो you will fall in love with this one. Okay, and because man is basically, he loves nature, so this is something जहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, and once you start exploring this, you will get a lot of insights. So I really thank Vyapar Jagat for inviting me for today's